So third and fourth verse of 15th chapter. न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरुधमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा तदा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशिष्टा पुराणी. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this tree with the weapon of detachment. So doing, one must seek that place from which, having once gone, one never returns, and there surrender to that Supreme Personality of Godhead, from whom everything has begun, and in whom everything is abiding since time immemorial. तो भगवान जो बता रहे हैं जो कि ये जो पेड़ है जो रियल ट्री है, ये जो मटेरियलिस्टिक ट्री है, इट्स नॉट रियल ट्री. Real original tree is somewhere else, that is in the spiritual kingdom. So that kingdom we cannot perceive in this world. So that tree we don't know where it ends, where it begins, where is the foundation. But हम ये वाला जो ट्री है materialistic tree, इसको हम काट सकते हैं. We have to cut down this materialistic life which is going on life after life after life by changing the bodies. We have to cut this life by the weapon of detachment, because we are so much attached with this worldly life, we are not able to cut down this tree. So ultimately we have to cut down this materialistic tree and obtain the real tree, original tree of Krishna consciousness, of spiritual kingdom. That is a goal, that is a purpose, that is a motto of this life. So this materialistic tree has to cut down with the sword of detachment. ये विरक्ति से, त्याग भावना से हमें इस जगत से मुक्ति लेनी, विरक्ति लेनी, यहाँ से हमें परे होना है, क्योंकि हम इस जगत के नहीं हैं, हम किसी और जगत में आ गए. और यहाँ पर हम we are suffering, rotting, and so much anxieties are there. तो ऐसा करके ऐसा जगह में जाओ जहाँ पर कोई जाता है तो फिर वापिस नहीं आता है. That is the spiritual kingdom of Lord Krishna. Once you go, you will never return over there. तो इसमें एक एग्जांपल हमने बताया था. One never returns. What is the example? आवाज नहीं आ रहा है किसी का कोई. Anybody can speak. One never returns का एक एग्जांपल बताया था. कौन बताएगा? Can unmute and speak. हमारी आवाज आ रही है आपको? My voice is audible? Yes, Prabhuji, it is audible. So you know the example? No. Golok is a place when we reach, one never returns from that place. But I want the example. Okay. What is the example? किस चीज का एग्जाम्पल प्रभु? क्वेश्चन दोबारा पूछना. कि एक बार ही हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे.
Dwara will not return to this hellish world, this Dukhalyam Shashvatam world, this materialistic world. An example was there. So if nobody is remembering, I will tell the example. The example was that a prisoner in the jail, Yes, yes, yes. Prabhuji. मैं- उसको सारे फटे हुए कपड़े देते हैं वो, और सारे दिन उसको पत्थर तोड़ने होते हैं, और जो खाना मिलता है वो पानी जैसा ना, पानी जैसी दाल मिलती है ना, एकदम सूखी रोटी मिलती है, और पूरा एकदम उसको जमीन में ही सोना होता है, कोई कंफर्ट नहीं है। एक तरह एक हेलिश लाइफ होती है उसकी वहाँ जेल में। और जब वो अपना इम्प्रिजनमेंट का जो टर्म पूरा खत्म करके घर में वापस जाता है और अपने घर में आराम से रहता है, और दोबारा वो अगर जेल के बारे में सोचेगा भी, वो उसको एकदम याद आ जाएगा उस एक्सपीरियंस का, उस हेलिश एक्सपीरियंस का, उस हॉरिबल एक्सपीरियंस का, उस बैड एक्सपीरियंस का। You will never return to that jail again. So that's why this, you go to that place having once gone, one never returns, because you have so much pathetic experience in this Dukhale Mashashvatam world. So much tensions are there, so much anxieties are there, so many things are happening here. Our body is not healthy, our family life is not healthy, our relationships are not healthy, nothing is healthy here. If you want to become healthy, then take to spiritual life of Krishna consciousness, and war never returns. तो इसलिए हमें इस वर्ल्ड से पेसिमिस्टिक एटीट्यूड बना के रखना है। यहाँ पर हमें आनंद नहीं लेना है इस जगत में, आनंद भगवान के कीर्तन में लेना है, आनंद हमें भगवान के शास्त्रों को पढ़ने में लेना है, आनंद भगवद गीता को पढ़ने में लेना है, आनंद हमें सेवा करने में लेना है, और डिवोटीज को बनाने में आनंद लेना है। That is a pleasure, that is a taste we have to gain, and there in that abode you take Sharanagati of the Supreme Lord. From you everything has begun. सारा कुछ भगवान पे रेस्ट कर रहा है टाइम इमेमोरियल से। It's now clearly stated that the real form of this banyan tree cannot be understood in this material world. Since the root is upwards, the extension of the real tree is at the other end. No one can see how far the tree extends, nor can one see the beginning of this tree. जो रियल फॉर्म है वो यहाँ पर नहीं समझ सकते, कि इसकी जड़ें ऊपर है, इसका जो पत्ते वो नीचे हैं, कहाँ गया है, कितना उगा हुआ है, कितना जा रहा है, कितना कहाँ बिगिनिंग है, किसी को कुछ पता नहीं। Yet one has to find out the cause. I am the son of my father is the son of such and such person. By searching in this way, one comes to the Brahma, who is generated by the Garbhodakshai Vishnu. Finally, in this way, one reaches the Supreme Personality of Godhead. That is the end of the research work. Scientists जो हैं, वो सारा टाइम क्या करते रहते हैं? रिसर्च वर्क करते हैं प्रभु जी। हाँ, रिसर्च करते रहते हैं जी, बट वो एंड तक तो पहुंच ही नहीं सकते प्रभु जी, ना आदि पता है उनको ना अंत पता है। हाँ, वो सोचते हैं कि कम कुछ कोई हम ही कर रहे हैं सब कुछ, है ना। वो सोचते हैं कि ये वर्ल्ड हमारा है, हम केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, केमिकल्स का रिएक्शन होगा, उससे पूरा वर्ल्ड क्रिएशन हो जाएगा, और ये हम सारा काम हम कर रहे हैं। बट उनको पता नहीं है कि क्रिएटर कौन है, मेंटेनर कौन है, डिस्ट्रॉयर कौन है। क्रिएटर को किसने बनाया है, उनको कोई गर्भोदक्षाई विष्णु का कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई ब्रह्मा की कोई नॉलेज नहीं है, एंड अल्टीमेटली सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड का तो बिल्कुल कोई नॉलेज है ही नहीं। सो देयर रिसर्च वर्क इज नॉट फ्रूटफुल, इट्स मीनिंगलेस दैट रिसर्च। So that is not the research, this is the research. You become a jigyasu, become inquisitive, and research for the absolute truth of the life. And the end of the research work is Supreme Personality. My father is coming from their father. His father came from his father. And his father, his father, his father. And ultimate father is, parents is Radha and Krishna. They have no parents.
तो भगवान सबके उद्गम है, सारी चीजों के कारण है, सारी चीजों को उत्पन्न करने वाले हैं. One has to search out that the origin of this tree, the Supreme Personality of Godhead, through the association of persons who are in the knowledge of that Supreme Personality of Godhead. Then by understanding, one becomes gradually detached from this false reflection of reality. And by knowledge, one can cut off the connection and actually become situated in the real tree. तो हमें वो जो रियल पेड़ है उसकी खोज करनी है, भगवान की खोज करनी है, साधु संग करना है, जिनके पास ज्ञान है भगवान का उनके साथ बैठना है, ऐसी समझ लेकर, ऐसी त्याग भावना से हमें इस भौतिक पेड़ को काट देना है और हमें एक्चुअल धाम की प्राप्ति करनी है, भगवान के धाम में जाना है. That is important, that is a journey, that is a purpose. The word asanga is very important in this connection because the attachment for sense enjoyment and lording it over the material nature is very strong. Therefore, one must learn detachment by discussion of the spiritual science based on authoritative scriptures, and one must hear from persons who are actually in knowledge. असत्य संग त्यागा यही वैष्णव आचार. वैष्णव का आचार क्या है? असत संग त्यागना. वर्ली लोगों का एसोसिएशन को त्यागने का, जिनका कृष्ण भगवान कृष्णा कॉन्शियसनेस से कोई लेना देना नहीं है, उनको उनके साथ हमको भी मिलना नहीं, क्योंकि हमको वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लक्ष्य से उल्टा लेकर जाएंगे. तो आई शुड एसोसिएट विद दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन टेक मी टू कृष्णा, नॉट ही विल टेक बैकवर्ड्स टू हेलिश लाइफ. तो हमें जनसंघर्ष के साथ एसोसिएट नहीं करना है, वर्ल्डली लोगों के साथ एसोसिएट नहीं करना है. अगर एसोसिएट करना है तो उनको चैंटिंग करवानी है, उनको भगवद गीता देनी है, उनको टेंपल बुलाना है, उसके लिए एसोसिएट करना है. अपनी एसोसिएशन उनको देनी है, उनकी एसोसिएशन नहीं लेनी है. We have to give them association, not take their as materialistic association. This thing is very, very important in this family life. प्रभु जी एक बार ये श्लोक रिपीट कर देंगे जरा. हाँ, ये वाला श्लोक रिपीट कर दीजिए जरा. कौन सा श्लोक? असत्संग त्यागा वैराग्य. असत्य संग त्यागा ए वैष्णवाचार. में वैष्णवाचार. ए जी. वैष्णव का जो आचार है वो आचार, वैष्णव का बिहेवियर कैसा है कि टू डिसोसिएट फ्रॉम द वर्ल्डली माइंडेड पीपल. जी. Because worldly minded people will spoil your consciousness, will spoil your behavior. So I don't want to, because my life is very limited, very costly life I have to earn a lot of money, in lot of spiritual money I have to earn. So that money can be earned in the association of the spiritual people, not these worldly minded people. अगर कोई भक्त बनना चाहता है तो ठीक है, भक्त नहीं बनना चाहता तो we are also not interested. नहीं बनना चाह रहा है तो भी हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उन लोगों के अंदर, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कॉस्टली है. कैन नॉट वेस्ट दिस टाइम. व्यर्थ कालत्व, very, very important time this is. So that's why this asanga, and we have to not lord it over. Attachment for maya and lording it over the nature is very strong. आवाज नहीं आ रही प्रभु जी. अभी आ रही है? So the attachment towards maya and the lording over tendency is very strong. That's why we are taking birth after birth. Therefore, one must learn detachment by discussion of spiritual science. प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही. अभी आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा.